So let's go for it. Okay. Woohoo! Okay, guys, so my overall band is. Hey everyone, welcome back to my channel. For all of you who are new here, I'm Tanya. I came to Canada as an international student and now I'm working over here full time. So today is a really special and important day for me. I am standing right below the ILSC building. So I am giving my IELTS general exam today. This is located in downtown Toronto. I got here through the subway and मेरा 12:40 को स्पीकिंग टेस्ट है. आई एम जस्ट वेटिंग डाउन हियर राइट नाउ. 12:10 हुआ है. सो आई एम गोइंग टू गो अप एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू शेयर द होल एक्सपीरियंस एंड हाउ गिविंग एन आइल्स एग्ज़ाम फील्स लाइक. सो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी. मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है बट आई एम स्टिल नर्वस. आई डोंट नो अंदर कितना वो लोग वीडियो खींचने मुझे अलाउ करेंगे बट आई ट्राई टू एटलीस्ट गिव यू गाइस अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक. And then I'll also tell you कैसा गया पूरा. So wish me luck everyone and I hope I get the scores that I want. So let's go in. But wait, before going in, हर अच्छे काम से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए. So let's have this chocolate and then अंदर जाते हैं. Wish me luck guys. Exam done and dusted guys. I am just hoping I perform well and results अच्छे आए. The results are going to come in the next 3 to 5 days, so I will share that with you as well. But talking about the exam, it is exhausting क्योंकि 4-5 घंटे आप यहीं पर होते हो and you have to give your speaking first and then you have to give your listening, writing and reading. तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग है वो पूरा 3 घंटे. तो आप उठ भी नहीं सकते हो जस्ट सिटिंग. एंड आई थिंक मतलब अब इतनी आदत रही नहीं है एग्ज़ाम्स देने की विच इज़ वाई ज़्यादा टायरिंग लगा. बट ओवरऑल आई वुड रेकमेंड कि आप अपने साथ कुछ तो खाने के लिए ले आइए या जस्ट गो समवेयर एंड गेट सम फूड इन बिटवीन योर स्पीकिंग एंड योर रिटन टेस्ट. सो डू दैट बिकॉज 3 घंटे में मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई हूँ. आई एम सो टायर्ड. आई नो इंडिया में स्पीकिंग टेस्ट डिफरेंट डे पे होता है बट कनाडा में यूजुअली सेम डे पे होता है. सो डिपेंडिंग आप कहाँ पे हो आपका वो टेस्ट वैसा होगा. ऑल्सो इफ़ यू आर समवन हु नीड्स वाटर और राइटिंग अ टेस्ट तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी लेके आइए बिकॉज नथिंग एल्स इज़ अलाउड इनसाइड. वो पेंसिल्स भी अपने प्रोवाइड करते हैं, इतना स्ट्रिक्ट है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम होपिंग रिजल्ट अच्छा आए बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू ट्रीट माई सेल्फ विद सम कॉफ़ी बिकॉज I had a long day and it's Sunday, so I'm going to treat myself with pumpkin spice latte since it is fall now. So let's go. There is a Starbucks right here. So मैं जाऊँगी and I'll get my pumpkin spice latte. Let's go. So I was eagerly waiting for the results and आज finally while I was working from home मुझे एक email आया and it said that my results for IELTS are finally out. So I thought let's just check out my results and let's check it with you guys and see how much I scored. I am really nervous. एग्ज़ाम अच्छा था बट स्टिल आई एम अ लिटिल नर्वस क्योंकि बहुत टाइम के बाद एग्ज़ाम दिया है. आई जस्ट नीड टू स्कोर वेल टू गेट बेटर रैंकिंग. तो लेट्स सी क्या स्कोर है. एंड दे सेड दैट इट्स गोइंग टू बी ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. हियर दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक एंड जस्ट लॉग इन.
Okay, so results. Okay, yes. I need at least an 8 band. ये मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि मुझे 8 बैंड्स तो चाहिए ही चाहिए. सो आई एम जस्ट होपिंग मुझे आ जाए. एंड ओवरऑल मेरा बाकी सब अच्छा था. आई एम अ लिटिल नर्वस अबाउट स्पीकिंग एंड स्पेशली राइटिंग, क्योंकि राइटिंग सबसे डिफ़िकल्ट होता है एंड सबसे कम मार्क्स राइटिंग में ही मिलते हैं. सो लेट्स गो फॉर इट. ओके, okay guys, so my overall band is 8.5. I am so happy with this. I'm just very happy right now. I don't know what to say. Listening 9, reading 8.5, writing 7.5 and speaking 8.5. So overall I think I did pretty well with the amount of practice जो मैंने की थी. मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, थोड़ी सी की थी 1-2 हफ्ते के लिए. So with that I'm pretty happy, and they also have some remarks. So it says the test taker has fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriate usage. They may misunderstand some things in unfamiliar situations. They handle complex and detailed arguments well. Okay, so seems like a positive feedback. 8.5 bands counts for CLB 10 if you're doing this, if you're giving general IELTS. आपका स्कोर जो CRS में है उसमें वो CLB 10 जैसे काउंट होता है, which is I think the highest that you can get. So I am really glad about this. And overall guys, like this whole system was very easy. Like मेरा सब कुछ ऑनलाइन ही बुकिंग हो गई. I booked it online and 3 से 5 दिन में उन्होंने कहा था कि रिज़ल्ट आ जाएगा and रिज़ल्ट आ गया. So everything was pretty quick. I think physical copy अब मेल होगी मुझे, but overall it's easy and it's quick. This is how it is in Canada. I think India में भी similar ही होता है. But overall my exam experience was good. The center was nice, easy to locate, and you just need to make sure कि आप एक पूरा दिन फ्री रखिए. The good thing is that वो वीकेंड पे भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं. मैंने संडे को टेस्ट दिया था. So this was my IELTS experience, and overall I'm happy with the experience. I'll keep you guys updated with all of the things that I'm doing. And guys, only one thing would be that there were a few tips and tricks जो मैंने किए थे to get me the score that I got. I think they really worked well. So if you want me to share those tips with you, and if you want me to make separate videos of each of these sections, I can do that. Just let me know and मैं इनका एक specific series create करूँगी. But this was it for my IELTS exam experience. I'm very happy. It's Friday and last working day है, so I'm going to finish up my work right now, and then I'm going to go have a small party because 8.5 bands is actually very nice and I'm going to celebrate. So hope this video was informational guys. If you did like it, don't forget to like, comment and subscribe, and I will see you guys again soon. Till then, bye.